Good morning, students. Today we will start our new chapter number 7, diversity in living organisms. Before this chapter, you have learned about the fundamental unit of life, cell and tissue. Thereafter, you have learned tissue, and after these two topic, now you have learned that all the living organisms are made up of cell. That is, the cell is the structural and functional unit of life. In case of cell, when you have studied about in the topic cell, then in the case of cell you have seen and you have observed that a lot of diversification, even on the basis of the structure, on the basis of the shape, on the basis of the number, and on the basis of the other factors, cells has many more diversification. Just I given you example of the cell as because when you have studied about the cell, then at that time you have seen that although cell is the structural and functional unit of the life, but how the cell of the different organisms differ in their shape, size, and many more criteria. How you have felt this one? For example, when you study, first you have studied that the basic structural and functional unit and what are their different component parts like the nucleus and the cytoplasm. Thereafter, you have seen that there are different type of organism which made by a single cell only. Here is the classification on the basis of and the grouping on the basis of even on the structure of the cell is started. When you have observed that many more organisms are only made up by a single cell and many more organisms made up by more than one cell. At that time you have seen a group, two groups created. The two groups created, the first one is the unicellular and the second one is the multicellular. May you further, when you have studied and what you have found, you have later found that there are one basic difference between the all cellular bodies or the all cellular organisms, the structure based on the structure of nucleus, whether a true nucleus is present or not a true nucleus is present. At that time again there is a two group of the organism, that is the prokaryotic and eukaryotic. Similarly, you have seen that all the living organisms, that means all the living organisms means plants and animals both, at that time what you have seen? At that time you have seen that even both these and their structural and functional unit is the same, but they also possessing certain differences. Then again you may see that there are two different types of cells on the basis of these two different organisms, plants and animals. So you have seen a lot of differences even in such type of structure, which is the building block, which is the unit of the all living organisms. Similarly, when you talking about the living organisms, then that also have the different form. That is the diversity. What is the different form? What is the different size? What
what is the different shape, what are the different behavior, what are the different habitats in which they are living. All are this included under the category of the diversity in living organism. In this chapter we will study how they will differ. Here a definition you may see here by W.G. Rosen in 1986. Biological diversity can be defined as the diverse forms of living organism. Diverse forms of living organism. What is that diverse form? That diverse form may be in appearance, may be in shape, may be in color, may be in behavior, may be in habitats, and many more factors, many more things related with this diversification. That will we study in this particular topic and in this particular chapter. What we will study today? Concept and definition. The second part, the different level of expressing biodiversity. The third, we may today know about the different terminologies related with the diversity in the living organism, like the taxonomy, systematics and classifications. Why there is a need for classification and basis of classification, and what is the relationship between the classification and evolution. So now come, just I have given you one example here, and I told you that you may observe that you have learnt the topic cell, and you have seen within the cell how the cell is, although they are the basic structure of the plants and animals, but for the study point of view, how we have grouped them in the different categories. Now for any organism, there is a lot of organisms. It is to be estimated that 10 million organisms are present, and out of that only 1 or 2 million organisms so far have been explored and identified. That means all those organisms and their life form not similar, they may differ in the different aspect which you have seen in the definitions. आपने देखा होगा इस definition में कि किस तरह से वो एक दूसरे से differ कर सकते हैं. And for the understanding of the topic, a very good and a very simple example, you may start from yourself. आप खुद से ही कंपेरिजन करें. आप एक ऑर्गेनिज्म हैं, आप एक स्पेसीस हैं. आप या मैं या कोई भी व्यक्ति जो कि एक स्पेसीस है, वो अपने सराउंडिंग में पहले तो वो अपने ही जैसे स्पेसीस, सिमिलर स्पेसीस, माने हम अपने को देखें और अपने घर के अपने दूसरे सदस्य को देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें, तो क्या हम ये देखते हैं कि हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बॉडी डिज़ाइन क्या है? यही बॉडी डिज़ाइन तो है आपका किस तरह का अपीयरेंस है, किस तरह का शेप है, किस तरह का कलर है, किस तरह का बिहेवियर है. तो हैबिटेट तो अलग अलग, टेरेस्टेरियल कोई है, कोई लैंड है, टेरेस्टेरियल लैंड है, कोई एक्वेटिक है, कोई एरियल है, तो ये तो है. लेकिन उससे पहले जो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर जो उसका बॉडी डिज़ाइन हम लोग देखते हैं, उस बॉडी डिज़ाइन में क्या हम अपने ही स्पेसिस में क्या कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं? बिल्कुल हम देखते हैं. एग्जैक्टली हमको ये दिखाई देता है कि हम ये देख पाते हैं कि हमारा नोज़ का शेप कुछ अलग है, ईयर का ये लोब इस अटैच है, ये फ्री ईयर लोब है, या इस कलर का डिफरेंसेस देखते हैं, हाइट का देखते हैं, इवन हम स्पैन ऑफ हैंड का देखते हैं, है ना. ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ द डाइवर्सिटी.
इसी का नाम डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इसका मतलब ये डाइवर्सिटी एमोंग द सेम स्पेसिस, एमोंग द डिफरेंट स्पेसिस, एमोंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप जब किसी सिमिलर सेम स्पेसिस में जब इतने सारे डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग सो मेनी डिफरेंसेस इवन इन द सेम इन ए पर्टिकुलर स्पेसिस, हाउ इट विल नॉट इम्पैक्ट or how it will not differ from the other species or from the other group of the organisms. If you will now compare yourself with a monkey, अब हमको अपने को बंदर से मंकी से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंकी हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा अब ऐसा है जो हम मंकी के साथ शेयर कर रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन का या बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए जो इतने सारे क्लासिफिकेशन किए गए, इतने सारे ग्रुप में एनिमल और प्लांट को रखा गया, उसका बेसिस यही है कि हम कौन सा स्पेसिस किस तरह से एक शेयर को, कॉमन कैरेक्टर को शेयर कर रहा है, हाउ दे आर शेयरिंग द कैरेक्टर्स। So now we are sharing common characters with monkey. But if you will, maybe your friend, you and the monkey, they will sharing they जरूर करेंगे वो शेयर, एक दूसरे से कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होंगे। बट नाउ इफ यू विल कंपेयर yourself, your friend, and not with monkey, with cow, then now what you have sharing with monkey, not sharing with common characters with cow, now it is somewhat more different. तो ये एक एग्जाम्पल देके आपको बताया गया कि किस तरह से देखिए एक सेम स्पेसिस में आपका डिफरेंसेस देखा गया। फिर हमने दूसरे स्पेसिस से देखा तो क्या क्या कॉमन कैरेक्टर शेयर कर रहे हैं, कौन हमारा सबसे क्लोज़र है और कौन किससे हम कुछ दूर हैं। हाउ far away from the cow, how we are nearer to the monkey. That is the similarity, that is the resemblances, or how we are differ from the other. So that will be categorized under the different category, under the different group, and there will be the classification of the particular organism. Now, in the next part, we have seen so far that there is a differences. These differences of the life form is, you may observe that even you have seen in case of the bacteria that they are microscopic and a few micrometer their size. And when you compare with this bacteria with the another tree, then may you see that there a few meters they are longer. How they are far away in the size, and if they are far away in the size, if they are differ in the size, they also differ in the other characteristic features, and these differences will lead to form the different group of the organisms. That will be discussed later on. Basically today we will discuss all these things to understand about the topic, about the chapter. So now we will come to this part and try to understand. Before that we would like to give you some examples how you will compare the differences in the different life forms. Now look here, the three important observation here. What is the observation? The observation for the different life form, that means the diversity, and this diversity related with the size, form, shape, color, function, etc. Here there are three examples. There are several organisms that are microscopic and cannot be seen with the naked eyes, whereas
there are large trees like redwood trees of California, about 100 meter high. And similarly, there are some animals like blue whale having the 30 meter size, that is the 30 meter that will surround us. यानी हम अपने चारों तरफ इस तरह के भी एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑर्गेनिज्म का जिनका साइज जो है माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम फ्यू माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे या एनिमल का एग्जाम्पल हमारे सामने है जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर्स हाई, इसकी जिसकी ऊंचाई दरख्त पेड़ की जो है लगभग 100 मीटर है, और किसी का जो बॉडी का जो साइज है जैसे कि ब्लू व्हेल का वो लगभग 30 मीटर लंबा है। तो ये जो डिफरेंट है, ये दैट इज़ द फॉर्म साइज का डिफरेंसेस देखा आपने। इस तरह से ये फ्यू ऑर्गेनिज्म हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन यानी कि ज़िंदा रहने का जो समय है उसका कितना दिन तक उसका ज़िंदा रहता है, जीवित रहता है। तो उसमें आपने देखा मॉस्किटो फ्यू डेज वीक में उसका ये हो जाता है, लाइफ समाप्त हो जाता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जो बहुत सालों तक भी जीवित रहते हैं जैसे कि पाइन ट्रीज। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल जो इसमें दिखाया गया है, इन द थर्ड पॉइंट यू मे सी हियर दैट द सम ऑर्गेनिज्म लाइक बटरफ्लाइज आर ब्यूटीफुल एंड ब्राइटली कलर्ड वेयर एज some are colorless or even transparent like comb jelly. These three observation is the diversity in organisms. This observation is not the limit. It is just I have given examples and the observation. This observation is not related with all the different types of differences which you may observe among the different types of organisms. There are many more differences may you observe. Even when you have to select some characteristic features like where the organisms can live, what is the habitat. If you will select habitat, one of the important criteria for a particular organism, then may you see a variety, a diversity in that way. Like when you're talking that there are so many organisms which are living on the land, terrestrial. Even in the terrestrial में भी फिर आप उसमें डिफरेंस देखेंगे। अगर प्लांट का आप ले लें तो कुछ हेलोफाइट है, कुछ एपीफाइट है, कुछ मेसोफाइट है, कुछ जीरोफाइट है, तो ये सारे डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। इस तरह से फिर एक्वेटिक आपने अगर कह दिया एक्वेटिक पानी में रहने वाला, तो एक्वेटिक में भी फिर डिफरेंसेस देखेंगे आप। कुछ एक्वेटिक ऐसे हैं जो कि सबमर्ज्ड हैं, कुछ डूबा हुआ उसका पार्ट है बॉडी का, कुछ उसका पार्ट जो है पानी के ऊपर है, अब कुछ फुल्ली मर्ज्ड है यानी कि पूरे का पूरा पानी के अंदर रह रहा है। एल्गी का बहुत बड़ा ग्रुप जो आप देखेंगे तो वो सारा का सारा पानी के अंदर, समंदर के अंदर रह रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे आप केवल एक कोई क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर लें बाय योर ओन, and may you try to understand how, depending upon this particular criteria around us, which there are several types of organism, how they differ. अगर आप न्यूट्रिशन को ही ले लें कि व्हाट आर द, आपने क्राइटेरिया न्यूट्रिशन को ले लिया, अब न्यूट्रिशन को ले लेंगे तो आप देखेंगे कि वी आर नॉट द सेल्फ फीडर्स, वी आर द हेटेरोट्रॉफ्स, एंड वेयर एज द green plants which possessing the chlorophyll molecules in their body, they are the autotrophs, they are the self feeders. तो ये इस तरह का आप डाइवर्सिफिकेशन देख पाएंगे। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही किस तरह से how the organism will put together after getting the different related the resemblances or differences, similarities and differences, किस तरह से एक दूसरे से मिल रहा है तो उसको एक ग्रुप में रख देंगे, बड़े ग्रुप में कर देंगे। फिर जो नहीं मिल रहा कैरेक्टर, जो कॉमन शेयर नहीं कर रहा है एक दूसरे से, तो उसको फिर अलग इस तरह से इसको बनाया जाएगा, ग्रुपिंग किया जाएगा, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट। हियर इज़ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी। हाउ वी विल ऑब्जर्व, हाउ वी विल सी the different life forms
expressing their diversification, how they will differ, like genetic variability within a species, within a same species, like it includes morphological differences among organisms of a species. What is the morphological? Morphology means external feature of the organism. External feature of the organism is known as morphology. Morphology means external features of an organism is the morphology. Within a species, how it differ? It includes morphological differences among organisms of a species, namely flower colors, height of plant, body size of an animal, color pattern of skin, etc. These features develop due to gene differences. So this is the first we have seen the level of expressing biodiversity. The second level of expressing biodiversity, diversity of populations of a species. This represents differences among the organisms of different populations of the same species, even of the same species, but they are living in the different places, in the different biospheres. Then they may be not all similar in all the different characteristic features. They may differ. That is the diversity of populations of a species. That means if there is a population, and suppose there is a population, also there is some population B, some population C. So there is some subpopulations, and in these subpopulations also the same species will show certain differences in their characteristic features. The diversity of populations. The third one is the diversity of a species within a community. It is represented in terms of varieties of different species in a particular area or a habitat. किसी एक एरिया और हैबिटेट में कई स्पेसीज जो हैं वो अपने डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, डिफरेंट साइज, डिफरेंट हाइट के हो सकते हैं, जिसको उसका वैरायटी कहा जाता है. और ये अभी आप बहुत सारा ऐसा पौधा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंगो का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो मैंगो के कितने सारे वैरायटीज़ हैं जो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट, या एक प्लेसेस में अगर हैं वो, और अगर उसका जो सब पॉपुलेशन अलग अलग है ना, तो सब पॉपुलेशन में और जो उसका जो अपीयरेंस है, फीचर्स है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप देखेंगे तो उसमें कई तरह के आपको डिफरेंसेस मिलेंगे. तो इसी को कहा गया यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज विद इन ए कम्युनिटी. बहुत सारा स्पेसीज मिलकर के अब एक कम्युनिटी को फॉर्म किया. इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए हैबिटेट. किसी एक हैबिटेट में, किसी एक जगह पर रहने वाले जो डिफरेंट स्पेसीज हैं, इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट स्पेसीज हैं, उनमें किस तरह का डिफरेंसेस देखा जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए हैबिटेट. इसमें आपने देखा कि एक ही स्पेसीज अगर डिफरेंट सब पॉपुलेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो भी एक दूसरे से डिफ़र कर सकता है. और इसमें आपने देखा कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में डिफरेंट स्पेसीज हैं और उस डिफरेंट स्पेसीज के क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. मगर चूँकि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, तो कोई न कुछ इसको एक शेयर कर रहा, कॉमन कैरेक्टर या हैबिटेट शेयर कर रहा. मैंने उसमें अगर डिफरेंट स्पेसीज हैं लेकिन सबका हैबिटेट एक है, तो ये तो एक कैरेक्टर है जो वो डिफरेंट स्पेसीज शेयर कर रहा है. लेकिन सिर्फ केवल ये एक कैरेक्टर शेयर करने से ही
उसका ग्रुपिंग नहीं होगा। इसी को एरिस्टोटल ने इसी को किया था ना, हैबिटेट के आधार पे उसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली हैबिटेट्स, बट दैट इज़ नॉट appropriate and that is rejected। मन पानी में रहने वाले को उसने कहा कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, लैंड पर रहने वाले का अलग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद जो है एरियल जो है उसका अलग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, बट दैट इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट। इसके बाद आप एक और इसमें पॉइंट देख सकते हैं, वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। Different levels of expressing biodiversity. We have completed 3 important points in this regard. In the first point, we have said that how there is a genetic differences between the same species and how they show the level of they express the level of diversity. And after that we have seen in the second case that there are different subpopulations of the same species and how they show the level of diversity. And in the third case, in the third point, we have seen that within a community there are different types of species and how these different types of species poses different varieties and how they show the level of diversity. And now we may see here in case of the ecosystem, in the third point we have seen in a particular place, here there is a more and more diversification, like ecosystem diversity. It is expressed in terms of various communities. In the last number 3 point we have seen in the community, but in this number 4 we may see that it is expressed in terms of various communities in different habitats of ecosystem. ecosystem के different habitats, उसमें मैंने किसी particular habitat में हम लोगों ने different species के level पे जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिला था different species के द्वारा, उसको हम लोगों ने observation किया। लेकिन इसमें different habitat, किसी ecosystem के different habitats के आधार पे जो हमें लेवल ऑफ डाइवर्सिटी एक्सप्रेस हो रहा है उसको देखने को मिलेगा। ये था कुछ बातें। बिफोर गोइंग इनटू द डिफरेंट फर्दर पॉइंट्स दैट will be included for today's discussion, but that will be not completed due to lack of time. But before that, we want to give you these 3 terminologies and their definitions. Here the first one, classification. It is defined as a system of arrangement of organisms into groups showing relationships. This is the classification. The second one, taxonomy. It is the study of all plants and animals. The first time who classify the entire organism into the 2 broader groups, and the first proper way of classification made by one of the important scientists and who is known as who is considered as the father of taxonomy. I will not say the name, you may guess the name. In the next class we will discuss about them. Taxonomy, it is the study of all plants and animals, their identification and classification. And the last one here, the third number, systematics. It is a discipline, that means it is the part, it is the field, or it is the discipline which deals with the kinds and diversity of all organisms and the existing relationship among themselves. Need for classification. Here a few points why classification is essential. You may have seen that even on the level of a species only there are many diversification, the differences. If you are talking only about one particular species, they are differ with each other. And if you will consider the entire world, living world, how they are differ to each other, it is impossible to study them one by one. That's why
classification is essential. Here are some points. Classification makes the study of a wide variety of living organisms easy. This helps, number 2 point, this helps in understanding the phylogeny, that means the evolutionary history, how the present or the existing species came into from the gradually after a long period of time due to the evolution. Understand? And number 3, it provides knowledge about the origin and genetic relationship among living beings. Number 4, we will see all these things when we will study categorically the different classifications of the living organisms. One can know the characteristics of the whole group of organisms by studying only a few members of that group. Like when you're talking about the Monera, when we will classify in the 5 kingdom, the Monera. So now under the Monera, all the unicellular prokaryotic are present. So whatever may be the different species which are included under the unicellular prokaryotic, all will be studied at a glance when we will study about the features of the Monera. Similarly, all the groups like the Protista, like the fungi, it provides information needed for all the branches of biology. So for today's lesson, we have completed so far. Due to lack of time, we further on the basis of classification and classification and evolution we will discuss in the next class.